All right. So today there are two main things that I would like to talk about, but if the time permits, मेन चीज जो आज मैंने डिस्कस करनी है वो है हाउ डू वी नेम ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है. अब ट्रांजिशन मेटल्स की नेमिंग स्कीम इज एक्चुअली अ वेरी अमेजिंग feat of human thought, क्योंकि you have almost 12 million things and you are able to make unique names for each of them. और वो नाम इस तरह से हैं कि वो उन 12 मिलियन 1 करोड़ 20 लाख कॉम्पाउंड में से आपको कोई भी एक का मैं नाम बताऊं तो दुनिया में कोई भी बंदा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझता है वो उसका स्ट्रक्चर फौरन ड्रॉ कर लेगा. स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर लेगा, उसके बारे में प्रॉपर्टीज बता सकता है, वो उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकता है. और हमारे पास छोटे से रूल्स हैं जिनसे वो डिसाइड होता है कि वो क्या नाम होंगे. सो बिफोर वी डू दैट, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मेरा नाम है अहमद बुखारी. अब इन दिस पार्ट जो अहमद है ना, ये मेरा पर्सनल नाम है. दिस आइडेंटिफाइज मी. और ये मेरा फैमिली नेम है. दिस आइडेंटिफाइज द लार्जर ग्रुप दैट आई एम अ पार्ट ऑफ. मेरा जो भाई है उसके नाम में बुखारी आता है, लेकिन उसके नाम में अहमद नहीं आता. क्यों? क्योंकि बुखारी is a family name. It tells us the general group that we both come from is the same, but individually I am Ahmed and he is Ahsan. Now let's say मैं PhD कर लेता हूँ, तो अब मेरा नाम हो जाएगा डॉक्टर अहमद बुखारी. अब ये जो डॉक्टर है ना, this is giving me some extra faculties, some extra qualification. ठीक है. ये जो एक्स्ट्रा बिट मेरे नाम में ऐड हुई है ना, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स. एंड दिस इज जस्ट अ टेस्टामेंट ऑफ कि मेरी क्या क्वालिटीज हैं, कोई एबिलिटी है एकेडमिक जो मेरे पास अब आ गई है, पहले नहीं थी. इट गिव्स मी सम एक्स्ट्रा थिंग्स आई कैन डू. और लेट्स सपोज मैं कल को रिटायर हो जाता हूं, तो नाम के एंड पे यूजुअली हम रिटायर्ड लगा देंगे. ये होता है सफिक्स. एंड टुगेदर ऑल ऑफ दिस मेक्स सम फ्यूचर PhD वाला अहमद बुखारी जो कि रिटायर हो गया उसका नाम. केमिकल कंपाउंड्स में भी हम ऐसे ही करते हैं, बट द डिफरेंस इज कि जो फैमिली होती है उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज. दिस आइडेंटिफाइज द जनरल ग्रुप दीज केमिकल्स आर अ पार्ट ऑफ. अगर मैं उर्दू बोलता हूँ, मेरा भाई उर्दू बोलता है, वी हैव दैट थिंग एज कॉमन. सिमिलरली अगर एक कंपाउंड बर्न होता है और दूसरा भी बर्न होता है एंड दे आर इन द सेम होमोलोगस सीरीज, तो हम कह सकते हैं कि तीसरा भी उसी में जो होगा वो भी बर्न होगा. दे बिहेव इन अ सिमिलर फैशन. पर्सनल नाम तीनों का डिफरेंट होगा, and that depends on the number of carbons in it. So it does not matter how the carbons are bonded as long as it's in the main chain. और वो हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 6. That's good enough. 1 is meth, 2 is eth, 3 is prop, bute, pent, hex. The homologous series, they give us names for each one of them. वो different होते हैं, but a few of them मैं अभी आपको बताऊंगा वो क्या. Prefixes increase the functions or the properties of the compound, and they are called functional group many times or branches. And sometimes the main functional group is added as the suffix, क्योंकि some functional groups make the homologous series different. So let's put it all together. Let's identify a few functional groups and let's identify a few suffix. So अगर हमारे पास कोई carbon carbon bonds हैं and all carbon carbon bonds are single, then we will add "ane" to the end of the name. Or sometimes we just add "an", not "ane". डिपेंड करता है. अगर हमारे पास लास्ट है तो "ane" हो जाएगा, और अगर लास्ट नहीं है तो खाली "an" होगा. सिमिलरली अगर आपके पास कोई एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गई है
then it will be having en in the name. और अगर कोई दो आ गई हैं तो it will be called diene. ठीक है, so two double bonds between carbons you call it diene. तीन होंगी तो ट्राइईन. ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गई है तो उसको आइन बोलेंगे, एंड दो हैं तो डाइन बोलेंगे, एंड तीन हैं तो ट्राइइन बोलेंगे. एंड दैट इज हाउ यू नेम दीज थिंग्स. सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव फॉर्मूलाज हमने किए थे, सो अगर मेरे पास कुछ इस तरह से है जिसको मैं CH3 बोल सकता हूं, then this has just single bond, so it will be eth. क्यों? इसमें दो मेन कार्बन चेन में कंपाउंड्स हैं, कार्बन एटम्स हैं, and ene because it has just single bonds. But if I have, let's say, CH2 double bonded with CH, which is then CH, sorry, and then CH2, for example, यहाँ पे भी double bond है, so this one is going to be called diene, तो उसके नाम में होगा. और इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 carbons in the long chain, so I will call it butadiene या butadiene. उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी होंगी जो हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्यूटाइन बोल रहे हो तो मुझे क्या पता कहां पे है डबल बॉन्ड, तो वी विल नंबर के लोकेशन बताएंगे. सो दैट लोकेशन कैन बी फ्रॉम द लेफ्ट और इट कैन बी फ्रॉम द राइट. इट जस्ट हैज टू बी द स्मॉलेस्ट नंबर्स. अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूं, माई फर्स्ट कार्बन हैज अ डबल बॉन्ड, सेकेंड पे नहीं है, थर्ड पे डबल बॉन्ड है, तो मैं इसको बोल सकता हूं ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन हैं, 1 3 क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पे डबल बॉन्ड है, डाई क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, एंड इन. सो दिस पोर्शन, दिस इज लोकेशन, दिस इज काउंटिंग. हमने बताया कि कितनी है, एक है, दो है, एंड दिस वन इज द नेम. सो इन एनी वे जब भी आपके पास सफिक्स ऐड करना है आपने, या आपने ब्रांच ऐड करनी है, या आपने फंक्शन ग्रुप्स ऐड करने हैं, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. एवरी टाइम यू फाइंड समथिंग यू हैव टू डू LCN. LCN क्या है? लोकेट इट, काउंट इट, नेम इट. These three things are what you will start with. So let me draw something. Let's say मेरे पास ये है CH2 double bonded with C, then double bonded with C, H2, नहीं 2 नहीं होगा, CH3. Let's see, we have that. So how am I going to name this? So first of all, I'll identify I have 4 carbons connected together, so it is still but. Then the double bonds are there, so it must be ene. I have 2 double bonds, so diene. तो मैंने count भी कर लिया और मैंने name भी कर दिया. अब locate करते हैं. If I start from the right side, then first doesn't have it, second has a double bond, and third has a double bond. So I could say 2 3 diene, but let's start from the right side just to be sure. From the right side, from the left side, sorry, first carbon has a double bond, second carbon has a double bond, third one not with the fourth one, and fourth one तो खत्म हो गया ना. पहले मेरे पास आ रहा था 2 3, अब आ रहा है 1 2. So we will use the smaller numbers. So 1 2 diene. Okay. All right. अब sometimes क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं. फंक्शनल ग्रुप क्या है? सम एडिशनल एटम्स जो कि उसकी प्रॉपर्टीज को इनहैंस करते हैं. सो देयर आर सम दैट ओवरराइड द प्रॉपर्टी ऑफ द होल थिंग, तो उनको हम सफिक्स बोल देते हैं. जैसे हमारे पास एक ग्रुप है, इट इज कॉल्ड CHO. द वे इट्स अटैच्ड है कि इस साइड पे कार्बन के कुछ भी लगा होगा, कार्बन की डबल बॉन्ड्स होंगी और एक हाइड्रोजन के साथ होगा. This part is called an aldehyde. And if you have this, then al will be part of the name. Okay? And it will be at the end of the name. Similarly, we have CO
group. But this group, if it is attached to R and R क्या होता है? R is any long chain of carbon. Okay? R is any long chain of carbon. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कोई कार्बन है जिसपे एक ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, और इस साइड पे भी कोई कार्बन है और इस साइड पे भी कोई कार्बन है. This system where I have CO and that is joined to two carbons on the left and right, इसको हम बोलते हैं ketone. And this will have on at the end of the name. Similarly, we have R, which is again a long carbon chain joined with OH. If I have that, so मेरे पास OH इस तरह से bonded होगा. This will be called alcohol, or या alkanol भी बोलते हैं इसको. It will have OL at the end of the name. Similarly, if I have COOH, this isn't something new for you. You have seen it in O levels. RCOOH. This one is carboxylic acid. And this one will have OIC at the end of the name. This is just to give you a few ideas. This does not mean that these are the only ones. हम बाद में कुछ और भी देखेंगे, जैसे amine एक होता है, amide होता है, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर आप बहुत से और देखोगे. बट दिस इज जस्ट टू गिव यू अ जनरल आइडिया कि उसके नाम के एंड पे सफिक्सेस हम ऐड करते हैं व्हेन फंक्शनल ग्रुप ओवरराइड्स द होल प्रॉपर्टीज. सिमिलरली वी कैन हैव ब्रांचेस. ब्रांचेस आर पार्ट ऑफ द कार्बन चेन बट दे आर स्मॉल चेन्स जो कि मेन चेन का हिस्सा नहीं होती. लेट मी गिव एन आइडिया. लेट्स सपोज ये है. Now, first of all, to identify कि इनमें ब्रांच कौन सी है और मेन चेन कौन सी है, उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है. You take a pencil, you start from any end of the compound, यानी कि यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, यहां से कर सकता हूं, यहां से कर सकता हूं, या यहां से कर सकता हूं. Your goal is to join maximum number of carbons without picking a pencil. बस आप वापस नहीं आ सकते, मतलब आप घूम के वापस नहीं आ सकते. लेट्स ट्राई इट. मैं यहां से स्टार्ट करता हूं. 1 2 3 4 5. ओके, दैट इज वन वे आई कैन जॉइन 5. लेट्स ट्राई अनदर वन. 1 2 3 4 5 6. This one is better, bigger, right? So this one is going to be my long chain so far. Let's try one more time. 1 2 3 4 5 6. Okay, this one and the other one, they can both be used. इनमें से कोई ये एक आप पिक कर लें, आपकी मर्जी. Interestingly, it won't matter when it comes to the name. Either one is fine. Okay, so let's say I take this one. Now, anything that has carbon but not a part of this, anything that has carbon but not a part of this will be treated as branch. ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन भी ज्वाइन हो सकता है जिसके आगे कार्बन हो सकते हैं, बट वो सब ब्रांच होंगे. हम मेन इसको देखेंगे. सो एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है. इस ब्रांच में एक कार्बन, तो उसको बोलेंगे मेथ, और ब्रांच को शो करते हैं YL से, मिथाइल. This branch has 2 carbons, so ethyl. 3 propyl. अब इसका नाम कैसे होगा? लेट मी से कि बाकी सब हाइड्रोजन हैं, कोई डबल बॉन्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है. Let's name this thing. So my main chain is, ये मेरी मेन चेन है, और मेरे पास एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है. So let me try to name it. Again, मैंने आपको बताया कि जब भी ब्रांच हो, फंक्शन ग्रुप हो, आपने LCN करना है. Locate, count, and then name. All right, so let's start with the long chain. Long chain में 6 कार्बन है, hex. Single bonds हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, hexane. Then, where do they have the methyl branch? One way of looking at it would be, अगर मैं left side से start करता हूँ, तो it is on the second carbon, and the other branch is on the 4th carbon, sorry.
अगर मैं राइट साइड से यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 3 पे एक ब्रांच होगी, 4 5 पे एक ब्रांच, सो 2 4 या 3 5 आई विल पिक द स्मॉलर नंबर, सो आई विल बी लाइक 3 5 2 4 वाले को चलता हूं. सो आई विल से आई हैव 4 ethyl 2 methyl hexane. How do I decide whether to write ethyl first or methyl first? Usually it's written in alphabetical order, but in A levels it does not matter. आपकी मर्जी है, आपके मार्क्स नहीं जाएंगे अगर आप किसी और तरह से करते हो. हाँ, it's a good practice to use alphabetical order. Instead of branches, you can also have other functional groups. जैसे I could have chlorine. This is not chloride. This does not have a charge. Cl atom join हुआ है through covalent bond. हाँ, polar bond हो सकती है, but negative charge नहीं है इसके ऊपर. So this will be chloro. Br होगा तो bromo. Interestingly, OH can be used as a branch or alcohol. और उसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि कहाँ पे अल्कोहल बनता है और कहाँ पे उसे हम ब्रांच यूज करते हैं. उसका बिहेवियर अल्कोहल वाला ही रहता है, लेकिन हो सकता है कि कोई और चीज उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो कर रही हो. तो अगर ये अल्कोहल फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है तो हम इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं. अगर ये मेन चेन में आ जाता है, इफ इट मेक्स द टोटल कंपाउंड्स मेन homologous series, then we call it alcohol. But दोनों नहीं कभी भी करते. Okay? All right. Sir, Yes. could you give an example of this? Sure. Let's say I have this. So this is eth and ol. So ethanol. If I have this, prop-ol, propanol. If I have this, it will still be alcohol. So I'll call it prop. I'll just do LCN on hydroxide or hydroxy, sorry, not hydroxide. So it's on the first carbon from the right, second carbon from the right. So prop is 1, 2, count 2 of them, and ol, diol. Prop 1, 2, diol. But the moment I get something like this, now carboxylic acid will override the properties more than OH. So अब इसका नाम change हो जाएगा, and now this thing will be not alcohol, it will act as an acid. Sure, इनकी properties अभी भी alcohol वाली हैं. इस जगह पे अगर reaction होगा, alcohol वाला reaction show हो सकता है, but this is going to have a stronger impact. So we'll call it, this is 3 carbons, so propanoic acid. और अब नंबरिंग भी एसिड वाली साइड से स्टार्ट होगी. सो 1 2 3. अब ये सेकंड पे एक हाइड्रोक्सी है, थर्ड पे एक हाइड्रोक्सी है, सो आई विल कॉल इट 2 3 डाइहाइड्रोक्सी propanoic acid. Clear? Let me bring it all together. मेरे पास क्या है, 4 चीजें यहां पे. This part, this is my prefix, this is my functional group. या अगर कहीं और में होता तो ये ब्रांच होती. This part prop, this is my long chain. इसको मैं stem भी बोल सकता हूं, long chain भी बोल सकता हूं. This part M, this is telling me कि सिर्फ मेरे पास सिंगल बॉन्ड्स हैं. इसको हम स्टेम सफिक्स बोलते हैं. और लास्टली मेरे पास ये ओइक जो है, this is telling me the final suffix. The point I want to make using stem suffix and final suffix is कि you can have multiple suffixes in one name. Let me give you an example. Let's say मैं इसका नाम इसमें हल्की सी चेंज करता हूं, यहां पे डबल बॉन्ड आ गई है. अब इसका नाम
मेन चेन में चेंज आई है, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज नहीं हुआ है. It's only the main chain that has changed, which is why we will not call it propanoic acid. We'll call it prop because of the long chain, ene because of the long chain में double bond का होना. और ये कहां पे है double bond? It's on the second carbon. So prop 2 ene और फिर oic acid. And of course 2,3 dihydroxy अभी भी होगा. So this part is. Sir, Yes. how did you get the 2? Because the main suffix is still the carboxylic acid. So I'll start counting from here. 1, 2, and 2 pe jaake maine double bond I've encountered it. Got it, thank you. Okay. So that's how you name these. Sometimes we want to mention the final suffix ke saath ka number bhi. So I could have just said prop 2 ene 1 oic acid, and that would also be correct. मतलब मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ. Sorry, यहाँ पे. So that would also be correct. So longest chain निकालना आ गया. Let's try an example. Can you tell me what is the maximum number of carbons you can join in the long chain? It will not be this, because 1, 2, 3, 4, 5, 6, that is the longest number. So your main chain is this. And now that I have that, now I just need to look at my branches. So the branches are this, this, and this. And all branches are methyl. So I'll say I have the long chain here. So long chain ko agar main number karta hu, so 1, 2, 3, 4. So mera naam compound ka hoga 3, 3, 4. LCN करना है मैंने, locate, count, and then name it. मैंने locate किया. This one is on the third carbon. This one's also on the third carbon. And this one is on the fourth carbon. So I'll mention all three of them. मैंने किसी को skip नहीं करना कि वो ये तो third हो गया. कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. 3, 3, 4. Yes. If I start numbering it from the other side, so 1, 2, 3, is that okay? या फिर वो गलत हो जाएगा फिर? Let's try that. अगर मैं इस साइड से नाम देता हूँ 1, 2, 3, 4. Which one has bigger numbers? The दूसरी वाली number. है ना? The one in yellow, because it will give you 3, 4, 4. So we will prefer the one with smaller numbers. So basically, जिस carbon के पास भी पहले आके like ज़्यादा chains होंगे, तो we will consider that. Not necessarily. We'll always pick the one with smaller numbers overall. Okay. So 3, 3, 4. I've located them. Try, because there's 3 of them. Methyl, that's the name. So 3, 3, 4, try methyl. Now you might also see कि कई दफा वो यहाँ पे commas भी लगाते हैं. 3, 3, 4. It's fine. आप dash लगाएं, comma लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. Now, what's my main chain here? I have 7 in the main chain, so I'll call it hept. 7 है ना? नहीं, sorry, 6 है. So hex. And there's only single bond to hexane. And that is how I. Let's see. How many in the long chain? 1, 2, 3, 4, 5. How many in the branch? 1. So इसका नाम बहुत simple है. I have counting from the left side, because second पे मुझे double bond मिलेगी. So I will call it. This is 5, so pent. It has ene on the second, so pent 2 ene. And it has a branch, so 4 methyl.
and that's how I named it. Clear? Sir, do we put a dash between methyl and pent? आपकी मर्जी है. Okay. Usually it's not written. So that's how you name these things. I hope कोई issue नहीं होएगा. Sometimes we get cyclic compounds, compounds with loops in them. So for example, this is a loop. This is a loop. ठीक है? इनको हम बोलते हैं साइक्लो. और इनको फिगर आउट करने का तरीका ये होता है कि आप जितनी उसकी 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए ना, वो आप ऐड कर देते हो जब आपको फॉर्मूला बनाना होता है. Well, let's say इसका नाम है, ये इसमें ये चीज लग जाती है. Let's say I have this. Okay, let's try to name them. The one on the left side, I have 6 in the loop. So इसमें loop पहले आएगा. So मैं इसको बोलूंगा cyclohexane. And now I'll talk about the rest of them. और rest of them का तरीका क्या है? You start with counting. अब counting में भी हमारे पास preference होती है. अगर कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है तो उसको प्रेफरेंस देंगे, OH लगा हुआ है उसको प्रेफरेंस इतनी ज्यादा नहीं देंगे. क्लोरीन के होते हुए OH लगा हुआ है जैसे यहाँ पे, तो OH की प्रेफरेंस ज्यादा होगी, क्लोरीन की प्रेफरेंस कम होगी. इस तरह से चलता है. अब लेट्स ट्राई टू नेम दीज. सो यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, तो I'll say 1 2 डाइमीथाइल. मैंने इसको LCN किया है. कैसे? 1 2 methyls. Let me look at the second one. ये मेरे पास लूप है 5 का, लेकिन इसमें काउंटिंग कहां से शुरू करूंगा? यहां से. एंड आई विल गो इन अ वे कि मेरे पास स्मॉल नंबर्स आए. अगर मैं इधर से आता हूं ना तो ये 4th पे होगा, लेकिन मैं इस साइड से आऊं, सो इट विल बी ऑन द 3rd. सो आई विल पिक दिस वन. सो आई विल कॉल इट cyclopentane, and then I will change it to, what do I have? I have OH, so I'll call it cyclopentanol. और जब एंड पे आपके पास ये सफिक्स आ गया, इसका मतलब है कि ओल पे फर्स्ट नंबर है, ऑटोमेटिकली लगा दिया. अच्छा, अब बाकी इसमें क्लोरीन है तो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटानोल. देखिए मैंने पेंटानोल में ओल में 1 नहीं लगाया. इट इज अज्यूम कि वो 1 होगा. बट अगर मेरे पास यहां पे डबल बॉन्ड होती, नाउ आई विल हैव टू चेंज इट थोड़ा सा. सो नाउ माय नंबर्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट, बट दे हैव टू गिव मी द स्मॉलेस्ट नंबर्स ओवरऑल. सो लेट्स सी. अगर मैं यहां से 1 बोलता हूं और राइट को जाता हूं, तो पहले क्लोरीन आता है, मुझे पहले OH की तरफ जाना है. सो मैं अगर यहां से शुरू करता हूं तो 1 2 3 पे OH आता है और ये फिर 5 पे आता है. और अगर मैं यहां से काउंटिंग शुरू करता हूं तो 1 2 3 4, तो आई विल पिक द नंबर 2 and 4. वी आर स्मॉलर नंबर्स, सो आई विल कॉल इट, जरा गौर करना, एक्चुअली आई कांट डू दैट बिकॉज अगर मैं इधर आऊंगा तो मेरे पास डबल बॉन्ड इधर नहीं है. डबल बॉन्ड से गुजर के आना होगा मुझे. सो आई विल स्टार्ट हियर 1 2 3 4 5. सो आई कैन कॉल इट पेंट 1 ene 3 ol, and this is 5 chloro. So why wouldn't it be the other way around if you took the other carbon, the other side Because of the double bond? usually that will make it 2 chloro pent 1 ene 4 ol, and in this one we have a bigger number for the last suffix or the main functional group. सर वो तो ठीक है, मगर मैं इस साइड से कह रहा हूँ जिसपे आपका OH जो है नंबर 2 पे आ रहा है. यहाँ पे जी, अगर मैं बोलता ना तो वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ ना 1 ene, तो आई एम ऑटोमेटिकली इंप्लाइंग
कि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। सही। अगर मुझे यहाँ पे 1 यहां से करना होता ना तो डबल बॉन्ड यहाँ पे होनी चाहिए थी, जो कि है नहीं। सर तो अगर हम इस डबल बॉन्ड वही है लेकिन हम OH को नंबर 2 कार्बन पे नहीं ले सकते, देखो और द फिर मोमेंट यू से 1 3 और इन, 4 पे आ जाएगा। हाँ, बट द मोमेंट यू से 1 इन, तो उसका ऑटोमेटिक इंप्लीकेशन है कि 1 और 2 दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। सही सर, ठीक है। ठीक है, ओके सर। so that's why we can't have this. I'm going to give you some compounds. I want you to name them. Sir, Can you yeah, sir, I have a question. go on. How do we differentiate between a hydroxy and an alcohol in like a cyclic compound? So in cyclic compound, if you're using two suffixes like this one, तो हम इसे ओल ही बोलेंगे। लेकिन अगर कभी हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप आ जाता है जिसके होते हुए हमें इसको हाइड्रोक्सी बनाना पड़ता है, लाइक साइक्लिक के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो जाए, ठीक है, तो तब हमें उसको ओल बोलना पड़े, OH को हाइड्रोक्सी बोलना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास अगर ये साइक्लिक है और यहां पे COOH आ जाता है, ठीक है, और यहां पे OH आ जाता है। Now in this case I'll call it hydroxy, and this one will be the OIC part. There's a preference wise, it's the acid per alcohol or per VCl. What do you mean CL? In the sense like naming के अच्छा, लिए. प्रेफरेंस वाइज टॉप प्रायोरिटी पे हमारे पास अभी तक जितने हमने देखे हैं उनमें इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देन वी हैव द अदर वंस। फिर अल्कोहल है, फिर हमारे पास मतलब क्लोरीन तो कभी भी नहीं आएगा, वो हमेशा फंक्शन ग्रुप होता है। हाँ, एल्डिहाइड्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। Yeah, thank you. ऑलराइट, सो नेमिंग तो मैं आ गई। Does naming really help in making the compound? Let's try. So let's start with a simple one: 3-methyl but 1,2-diol. Let's see. So I have but, that means 4 carbon की main chain होगी। 1,2-diol, the first and second will have OH. So OH, OH. And 3 will have methyl. So 3 पे it doesn't matter अभी के लिए if you put it here or here, CH3 होगा and the remaining are just hydrogen. So this is a simple one. Okay, let's try one more time. 2-methyl 2,3-dibromo cyclopent 1-ol. This is correct. Let's try it out. So first of all, this is cyclo. So I will have this 1-ol. So 1 पे OH होगा। 2-methyl. So start from the right or the left, doesn't matter. So 2 पे एक CH3 होगा and 2,3-dibromo, Br, Br. And of course, the rest of it is hydrogen. We don't show it, but it's there. And this is like, this is the skeletal formula. And now we have done it. We have named it. Clear? Sir, does it matter if Br are on the different side or the same side? Right now, it doesn't matter Okay. because, okay, wait a minute. For this one, it actually matters. In the 3-dimensional formula. अभी के लिए तो हम सिंपल लाइंस शो करा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट देयर इज अ थिंग कॉल्ड कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कोई भी ऐसा एटम होता है जो अगर 4 बॉन्ड्स बनाता है तो चारों चीजें डिफरेंट हो, ठीक है, और उसकी स्पेशल अरेंजमेंट पे उससे फर्क आता हो। अब चारों चीजें सिर्फ कार्बन के केस में होता है, नाइट्रोजन के केस में भी कई दफा
चार वाला सेंटर बन जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, खासतौर पे जैसे कॉम्प्लेक्सेस में, you can have same bonding together, but the way it is arranged in space will cause it to show a type of isomerism जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इन ए लेवल्स वी जस्ट टॉक अबाउट कि लाइट के साथ उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है और उसकी वजह से हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। सो लेट्स आइडेंटिफाई, अगर यहां पे हमारे पास कोई कायरल सेंटर है, सो दिस वन एट कार्बन, इसके साथ CH3 है 1, Br2, CHOH 3 एंड CHBr 4। चार डिफरेंट चीजें अटैच हैं इसके साथ, 1 2 3 4, जिसकी वजह से ये होगा कायरल। सो यूजुअली वहां पे हम स्टार लगा देते हैं, और कायरल सेंटर की वजह से दो आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, इसी तरह ये कायरल सेंटर है, इसी तरह ये भी कायरल सेंटर है। Sir, could you please repeat how do we identify a chiral carbon? A chiral carbon is a carbon that's attached to 4 different groups. So आप उसके चारों ग्रुप्स को देखते हो, और अगर चारों डिफरेंट हैं तो फिर वो कायरल होगा। सो इनसाइक्लिक उसको देखने का तरीका ये होता है कि आप हर जो उसके साथ कार्बन देखा उसकी पूरी चीज को देखते हो। जैसे ये वाला कार्बन था, सॉरी, इस कार्बन के साथ Br है, एक ग्रुप है, मिथाइल एक ग्रुप है, CHBr ये एक ग्रुप है, एंड CHOH ये एक ग्रुप है। तो चारों डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ये कायरल है। कायरल कार्बन होने की वजह से इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन हमारे पास 3 कायरल हैं। इसका मतलब है इसके 8 आइसोमर्स बनेंगे, सिर्फ ऑप्टिकल वाले। 8 क्यों? 2 पावर 3। So basically 8 optical isomers. 8 optical isomers, yes. Okay. So that brings us to isomerism. Isomerism में हमारे पास ना 5 तरह के आइसोमर्स हैं जिनको हम अभी देखेंगे। Let's see. We'll divide it into 2 main categories. So isomerism है, एक को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल, जिसका सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम से फर्क पड़ता है, और एक को बोलते हैं स्टेरियो, अरेंजमेंट इन स्पेस से फर्क पड़ता है। इसमें आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होता, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों में सेम होता है, इसमें भी इसमें भी, मतलब तीनों मतलब दोनों में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसमें सेम नहीं होता, इसमें होता है, और अरेंजमेंट इन स्पेस that is different in this, that is different in this, same नहीं होती है। That is how we have these isomers। ठीक है, अब इनकी भी फर्दर कैटेगरीज हैं जिनसे हम आइसोमर्स बना सकते हैं। जो कैटेगरीज होती है ना, दे आर हेल्प अस आइडेंटिफाई कि वो किस तरह बिहेव करता है। एक है कि हम उसका चेन बदल दें, मेन चेन जो हमने बनाई थी ना, हम 6 वाली चेन की बजाय 5 बना लें, 4 बना लें, 3 बना लें, 2 बना लें, तो मेन चेन चेंज करते जा रहे हैं हम, बाकी सब ब्रांचेस में डालते जा रहे हैं। दूसरा है पोजीशन, आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन बदल दो, ब्रांच है उसकी पोजीशन बदल दो। और चौथा है फंक्शनल ग्रुप, आपके पास सेम एटम्स हैं, अगर वो OH बनाते हैं तो उसको एल्कोहल बोल देंगे, लेकिन CHO बनाते हैं, सेम एटम्स हैं बट उनकी बॉन्ड्स डिफरेंट हो गई हैं, तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छा, आप O को कहीं पे लगा दो, H को कहीं पे लगा सकते हो, उससे वो ईथर बन जाता है। सो फंक्शन ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है, सेम एटम्स उनकी बॉन्डिंग कंप्लीटली डिफरेंट कर देते हैं हम। इसकी एग्जांपल्स मैं सबकी करवाऊंगा। स्टीरियो में आपके पास स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, कि वो द वे दे आर अरेंज्ड इन स्पेस, वो 3 डायमेंशनल जिस तरह से अरेंज हैं वो डिफरेंट होता है। सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल, सो उसको हम सिस ट्रांस भी बोलते हैं। सिस मतलब सेम, ट्रांस मतलब डिफरेंट, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर ऑन। एंड द सेकंड वन इज ऑप्टिकल, ओके। एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है ये अ मोर रीसेंट डिस्कवरी है, एंड बेसिकली मींस कि कायरल सेंटर के होने की वजह से उसके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं और उसका बिहेवियर विद लाइट
डिफर करता है. विद लाइट डिफर करने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसीज एट विच इट लाइक रिस्पॉन्ड्स वो डिफरेंट हो जाती हैं, उसकी रेजोनेंस डिफरेंट हो जाती है, उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं उसकी वजह से. ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारे पास 3 है, चेन, पोजीशन, फंक्शन ग्रुप. चेन को देखते हैं. हमारे पास कोई है, लेट्स टेक अ सिंपल थिंग, 5 कार्बन वाली कोई चेन देखते हैं. 5 कार्बन वाली चेन को मैं ऐसे बना सकता हूँ, एक लॉन्ग चेन में 5 डाल देता हूँ. सो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 बना ली. आप इसका आइसोमर कैसे बनाओगे? अब देखोगे यार 5 हैं चेन में, अब 4 वाली चेन बनाएंगे. 1 2 3 4, 4 वाली चेन है लेकिन टोटल 5 बनाने हैं, तो ब्रांच बना लो. अब एंड पे कभी भी आप नहीं लगा सकते, वो आइसोमर नहीं बनता. मतलब मैं यहां पे लगा दूंगा तो आइसोमर नहीं बना, सेम बन गया. तो मुझे बीच में कहीं पे लगाना पड़ेगा. सो यहां पे लगा देता हूं. अच्छा, आप कहते हो कि मैं ना यहां पे लगाता हूं, तो टर्न्स आउट वो सेम है, बस वो रोटेट हुआ हुआ है. क्यों? 1 2 1 2. अच्छा, मैं कहता हूं मैंने 3 वाला बनाना है, 3 वाला बना लेते हैं. 5 वाला देख लिया, 4 वाला देख लिया, अब 3 वाला देखते हैं. 1 2 3, और मेरे पास थी, अब 2 कार्बन और लगाने हैं मैंने, तो 1 2. ऑलराइट, डन. सर, यस. हम एक चेन को लाइक नीचे भी लगा सकते हैं ना? व्हाट डू यू मीन बाय नीचे? लाइक इस पॉइंट थिंगी के नीचे. लाइक यहां से इसको यहां पे, Oh no, the second wala. No, third wala, sorry, yeah. The third thing you've drawn. इसमें. Yeah. व्हाट डू यू मीन बाय नीचे? Like the peak, right? और फिर नीचे आप ये? ऐसे लगा. Yeah, this. कर सकते हैं, यस ऑफ And do कोर्स. we have to draw this at like a slight angle या फिर फिर सीधा भी हो सकता है पूरा? लाइक वेस्पर टेल्स अस दैट देयर इज ऑलवेज एन एंगल, बट आपके मार्क्स यूजुअली वो नहीं काटता अगर आप इस तरह से नहीं ड्रॉ करते. Okay, ठीक है. Thank you. या, सो दैट इज द चेन आइसोमरिज्म. ऑलराइट. Thank you, sir. Okay. Hafiz. Allah Hafiz. Okay, sir. Allah Hafiz.